if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर वाइट हाउस ओवल ऑफिस के अंदर जाए और वहाँ पे जाके ट्रंप के साथ उसकी लड़ाई हो जाए और वो लड़ाई पूरी दुनिया टीवी स्क्रीनों के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर देखे? अगर आपने ये नहीं देखा तो ये हो चुका है और मैं आपको अभी ये सारी की सारी जो डिबेट, बहस, इनकाउंटर और आप इसको कुछ भी कह सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बता दूं कि पूरी दुनिया इस वक्त इस मामले को लेकर हिल चुकी है। चाहे कनाडा है, चाहे यूरोप है, चाहे बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, हर तरफ यही मामला डिस्कस हो रहा है कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे। रशिया और चीन इंतहाई खुश हैं और वो बगलें बजा रहे हैं कि ये ख़ुद अपने मसाइल में फंस चुके हैं। जिन लोगों ने इनका मुकाबला करना था मिल के वो सब आपस में तकसीम हो चुके हैं। अब हुआ ये है कि ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उसने फोर्स किया कि आप फौरी तौर पे जंगबंदी करें और अमेरिकी हमायत से आप महरूम हो जाएंगे। और ट्रंप ने कहा कि पुतिन मुआहदे के लिए तैयार हैं और ज़ेलेंस्की आप भी मुज़ाकरात करें। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने जो आपको पता है कि वो पहले दिन से सिक्योरिटी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले हमें सिक्योरिटी दी जाए, उसके बाद हम ये बात करेंगे, उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि जेडी वेंस भी वहाँ पे मौजूद थे और जो भी बात ट्रंप ने की थी उससे ज़ेलेंस्की बुरे तरीके से डिसएग्री हुए और फिर ये बात करते करते इस हद तक पहुँच गई कि तुम यानी वो कहते ना तेरी की औकात है। ट्रंप ने वहाँ पे तकरीबन वही बात कर दी कि तेरी की औकात है और तेरे हाथ में क्या है। और कहा गया है कि ये ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा थैंकलेस हैं, इन्होंने अमेरिका की बेइज्जती की है। और इस गैर मामूली तसादुम के बाद इजलास ख़त्म हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुअत्तल कर दी गई। मादनियात के हवाले से जो मुआहदा होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया। और हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से ये क्या समझ लें आपको, उसको वाइट हाउस से निकाल दिया गया। वाइट हाउस से निकलते ही ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन लीडर्स को फ़ोन किया है और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इसमें मैं आपको भी और भी बहुत सी ऐसी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त पूरे का पूरा यूरोप, ना सिर्फ यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ममालिक यूक्रेन के पीछे आके खड़े हो गए हैं। बेशक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर उनके मुंह पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम तीसरी आलमी जंग जो है वो करवाने जा रहे हो और अमेरिकी असला तुम यहाँ पे इस्तेमाल करते रहे हो। लेकिन बहरहाल वाइट हाउस ने इस हवाले से ये क्लियरली कह दिया है कि ज़ेलेंस्की ने यहाँ पे आके अमेरिका की बेइज्जती की है और जिस दिन वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे उसी दिन वो वापस यहाँ पे आ सकते हैं। रिपब्लिकन्स बेशक इस वक्त ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट दूसरी तरफ ट्रंप को कसूरवार ठहरा रहे हैं। यूरोप स्टैंड विद यूक्रेन हंगामी मीटिंग्स की डिज़ाइन हो चुकी हैं इतवार के रोज़, जिसमें ज़ेलेंस्की भी शिरकत करने जा रहे हैं। ब्रिटेन में वो पहुंच चुके हैं इस वक्त बरतानिया में, क्योंकि अमेरिका से सीधा वो बरतानिया पहुंचे हैं। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि नेटो, यूरोपीय यूनियन, तमाम ममालिक इस वक्त उसको ये यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यूक्रेन के सदर खाली हाथ अमेरिका से जा चुके हैं और आपको पता है कि बगैर अमेरिका की सपोर्ट, उनकी इंटेलिजेंस, उनका असला और दीगर चीज़ों के बगैर ना तो यूरोप रशिया के सामने खड़ा हो सकता और ना ही यूक्रेन। What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him.
He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was, he killed. I was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of the will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You Don't- will not have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with all back to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should Have have. you said thank you once this A lot entire of meeting? time. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if Indies? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter me. for you what That what wasn't this with me. means.
It That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. اچھا اس حوالے سے بہت زیادہ یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر امریکن اسلحہ اور دیگر چیزیں نہیں ہوں گی تو رشیا چند دنوں میں پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کر لے گا اور پھر اس قبضے کو کون چھڑوائے گا. تو بہرحال اس حوالے سے یورپ نے تو گارنٹی دے دی ہے, انہوں نے نیٹو کی فورسز اور ایک پیس کیپنگ فورسز اور ہر طرح کی یقین دہانی اور پیسے کے حساب سے بھی کہہ دیا ہے. اور ایون ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی کے صدر ہوں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یورپ اور جرمنی اسٹینڈ ود یوکرین. کینیڈا, میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تمام ممالک کا کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑی چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی پالیسی چینج کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کی مارکیٹ کریش کرنا شروع ہو گئی تھی, لیکن جب یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ کسی بھی قسم کی پالیسی چینج نہیں ہوگا, اس کے بعد وہ بھی ریکور ہوگی. تو بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اس کے اندر پیوٹن جو ہے یقیناً صورتحال کو انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی تک پالیسی کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. امریکن اسلحہ وہاں پہ موجود ہوگا, امریکہ کی مدد بھی ابھی تک فی الحال ہوگی, لیکن دیکھتے ہیں کہ کچھ دن کی مشاورت کے بعد یہ کس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ, یورپ آپس میں جو کہ پوری دنیا میں یعنی کہ جتنی بھی پاورز تھیں جو کہ ان کے لیے خطرہ ہو سکتی تھیں, مل کے ان سے مقابلہ کرتے تھے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چائنا ہو. لیکن اب یہ جتنے برے طریقے سے اس ایشو کے اوپر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہونے جا رہا ہے, اور صورتحال جو ہے وہ یقیناً اب مغرب سے مشرق کی طرف طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے. بھائی اس حوالے سے ہماری اپڈیٹ کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.